Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have Professor Shishpak and myself with us. Okay, well, I'm sure that fine and you are getting me properly. Just answer it in the chat box so that we may proceed further. Okay. Ishwak, welcome to our classes, and meanwhile, the rest of the participants are going to join us. Let me share some details with you. Like, we are going to proceed further. In the first section, we are going to discuss the important questions from the previous interviews. And in the second section, we have an interview today, and the interview of Ms. Hamina, in case she joins us, and in case she does not join us, then we are going to proceed further with another activity. And the assignment was the 4 great tragedies. So definitely we will discuss the questions that have been the part of previous interviews from these 4 tragedies. But before proceeding further, just do confirm it that I am audible and the screen is there so that I may proceed further. Okay. So it means your silence is telling me that I am not audible. Okay, I am. Okay, ji, thank you so much. Thank you so much. Okay, participants, we are going to share some questions with you, and we will try to understand that in case you are supposed to answer these questions, तो आपको किस तरह से इन questions को answer करना है, इन questions को tackle करना है. The complete list of these questions will be shared, inshallah. आपके साथ जो है ये शेयर कर दी जाएगी. In fact, it will be uploaded ताकि आप इनको जो है वो नोट कर सकें. Well, the first question, what do you know about the authorized version of Bible? ये क्वेश्चन जो है वो आप जानते हैं कि जब आप किंग जेम्स का मतलब क्या है, जैकोबियन एज के बारे में है, authorized version of Bible के बारे में है. So whenever you need to talk about the authorized version of Bible, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारनामा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन थी बाइबल की. इसके बारे में आप जितनी भी बातें कहना चाहें आप कह सकते हैं, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑथराइज्ड वर्जन की इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन में था क्या क्या. यू विल टॉक अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट, यू विल टॉक अबाउट द न्यू टेस्टामेंट. आप उस स्कॉलर्स की बात करोगे कि कौन कौन से स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. आप इसके अलावा ये बात करोगे कि इसके अंदर किंग जेम्स का क्या रोल था. आप इसके अंदर ये बताएंगे कि क्रिश्चियन जो हैं वो उन्होंने कहाँ तक इससे जो है वो हेल्प किया. और मेरी रिकमेंडेशन है कि व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट का पता होना चाहिए कि ओल्ड टेस्टामेंट से क्या मुराद है, और इसके साथ साथ आपको न्यू टेस्टामेंट का भी पता होना चाहिए कि न्यू टेस्टामेंट से क्या मुराद है. इन दोनों डिटेल्स को ढंग से देखिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाइबल जो है, क्वेश्चन पूछा गया था कि 1965 में कौन सी बाइबल थी जो कि बेस्ट सेलर रही थी. सो अमेरिका के अंदर दिस वाज द ओनली बाइबल ऑफ द किंग जेम्स दैट वाज अमंग द बेस्ट सेलर. ठीक है जी. तो ये आपको जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर करना है. ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट की भी बात करेंगे. फर्दर आप इससे मूव करेंगे और आप जो है वो बताएंगे कि इसके अंदर चीजें क्या क्या थी. सो क्या वजह थी ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल की थी. 1611 के अंदर आती है. इससे पहले भी बाइबल जो है वो मौजूद थी, ट्रांसलेट होती रही है और बहुत दफा ट्रांसलेशन उसकी होती रही है. पर व्हाट इज द रीजन कि ये ही बाइबल जो है वो क्यों फेमस रही है. तो इसके लिए आप जो है वो बात कर सकते हैं किंग जेम्स के हवाले से कि किंग जेम्स जो है वो इन इटसेल्फ ही वाज इंटरेस्टेड इन द बाइबल. आप इसके बाद जो है वो बता सकते हैं कि इससे पहले किस किस ने काम किया. सो ये तमाम के तमाम इसमें जॉन वाइक्लिफ का रेफरेंस आप दे सकते हैं कि जॉन वाइक्लिफ ने जो है वो जब काम किया था ट्रांसलेशन के ऊपर, आप जानते हैं कि 1382 के अंदर जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल की ट्रांसलेशन पे काम किया था. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप उससे जो है वो अपने इंटरव्यू के भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे दोबारा आपको ये बताऊंगा
in your interview you are supposed to lead your interview. You are not supposed to give interview there. You need to learn how you are going to lead them. And the very answer of this question is that you will put all those things, all those terms in your interview जो आपको लगता है कि that it is going to give them a clue. It is going to lead them and lead all those people who are interviewing you in a new direction. So my recommendation is there is a need to focus on this technique, that how you are going to manage your interview. So authorized version of Bible के अलावा जो है the most important part that I want that you should not skip is this influence. Okay, this influence, like how the authorized version was influencing the society, the literature, and all those things. So इसके बारे में भी आपको बात करना है. In fact, the question number 76 is related to this very question, that is about the impacts of authorized version of Bible. But before proceeding further, please do confirm me that this question, the answer of this question is clear, and you know have the hyperlinks with you, that how you will proceed further with the answer of this question. If you're supposed to answer this question, the authorized version of Bible, how you're going to proceed further. So you're just supposed to type clear in the chat box if this answer is clear, in case you want to go for the explanation. If there's anything else जो आप discuss करना चाहते हो तो discuss कर सकते. So इमरान सबको क्लियर है, बाकी पार्टिसिपेंट्स को क्लियर है, इशफाक सबको क्लियर है. ओके, इससे जो अगला हमारा क्वेश्चन है, that is what are the impacts of the authorized version of the Bible on English literature. Well, whenever you are listening, whenever you are going to answer any question, तो आपको अपने क्वेश्चन को बड़े ढंग से समझना है. इससे सोसाइटी नहीं पूछी, इससे सिर्फ लिटरेचर की बात की, इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है. देखिए, बाइबल 1611 में आई. 1611 में जब बाइबल आपके पास आती है तो उस वक्त इसका वही स्टेटस था जो हमारे पास कुरान पाक का, यानी कि लोग इसको पढ़ा करते थे, रोजाना पढ़ा करते थे. सो इट वाज इन्फ्लुएंसिंग ऑल द पीपल, ऑल द पीयर एंड द पीजेंट्स. सो नीचे से लेके ऊपर वाले तबके तक सब के सब लोग इसको देखा करते थे. लेकिन क्या था हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है, इसके अंदर वो के बिब्लिकल रेफरेंसेस थे, बहुत सी चीजें थी. लेकिन इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर को जो इसने असर दिया, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें कोट करना पड़ेगा जॉन मिल्टन को. मिल्टन ने हमें जो है देखा कि मिल्टन टाइम एंड अगेन जो रेफरेंसेस लेता है वो बिब्लिकल रेफरेंसेस लेता है. ठीक है. इसके बाद जो जॉन बनियन की बात करें, जॉन बनियन जो है वो पर्सन था जिसको लगता था कि बाइबल सबसे बेहतर है. इन केस यू वांट टू गो इन द डिटेल ऑफ दिस पर्सन, Bunyan is the writer, so who was thinking that ये सबसे अच्छी जो है वो किताब है. The second name that you need to talk about is Jonathan Swift. Swift जो है उसको लगता था कि बाइबल का जो स्टाइल है, इसकी जो राइटिंग है उसके अंदर परफेक्शन है. वॉल्टर स्कॉट की आप बात कर सकते हैं. तो आपको मेंशन करने हैं वो तमाम नेम अपने इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए जिनके कंधों पे आप खड़े हो सकें. And the meaning of this statement is always try to learn in your interview how you are going to speak, how you are going to stand on the shoulder of the giants. अगर आप अपने इंटरव्यू में giants के shoulder पे नहीं खड़े होते हो, अगर आप अपने इंटरव्यू के अंदर रेफरेंसेस को मैक्सिमम कोट नहीं करते हो, that means you are not going to bring anything different. आप एक जैसे पे चल के एक जैसे आंसर देने के बाद जो है आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं कह सकते हो. सो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को जब आप इसके इन्फ्लुएंस की बात करना चाहते हो लिटरेचर के ऊपर, यू नीड टू टॉक अबाउट विलियम स्विफ्ट एंड वॉल्टर स्कॉट. सो इन लोगों ने क्या कहा था, यू कैन इजीली टॉक अबाउट दैट. सो इवन वर्ड्सवर्थ की आप जो है वो स्टेटमेंट्स को ले सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ को लगता था कि बाइबल इज लाइक ए ग्रैंड स्टोर हाउस ऑफ एंथुसियास्टिक इमेजिनेशन. तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें मिलती हैं इंग्लिश लिटरेचर में. इसके अलावा एक और तरह का भी एक तासुर छोड़ा था बाइबल ने, जो ऑथराइज्ड वर्जन था बाइबल का, एंड दैट वाज इन्फ्लुएंस था जी इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, लिटरेरी इन्फ्लुएंस था. अब वो क्या होता है देखें, इससे पहले अदब के अंदर लिटरेचर के अंदर कभी भी चीजें थीमेटिक नहीं रहे थे, कभी भी स्टाइलिस्टिक उनका एनालिसिस नहीं किया गया था. सादा लफ्जों में बात करते हैं
कि लोग जो हैं वो मुश्किल मुश्किल चीजों को भी लिखा करते थे, लेकिन उनका स्टाइल कभी बेहतर नहीं हो सका था। जॉन बेनियन और इवन ऑस्कर वाइल्ड ने जो है वो सिंप्लिसिटी को और इसके जो स्टाइल्स को फॉलो किया था। वो मेंशन करते हैं, ऑस्कर वाइल्ड लिखता है कि मैंने ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल से ये सीखा कि मुझे अपने स्टाइल को कैसे बेहतर करना है। तो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जो है न सिर्फ एक रिलीजियस जो है वो पैटर्न पे नहीं बुक थी, बल्कि इसने लोगों की सेक्युलर नेचर को भी चेंज किया। जॉन रस्किन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, जॉन रस्किन जो है वो लिखता है कि मुझे जितनी भी बिब्लिकल कोटेशंस मिली वो सारी की सारी बाइबल से थी। और बाइबल ऑब्वियसली बिब्लिकल कोटेशंस का मतलब यही था, लेकिन उसके कहने का ये मतलब है कि उसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितनी भी पार्ट्स एंड पार्सल चीजें देखी, जो नागजीर चीजें थी, वो सारी की सारी यहीं से। So, in this way, you are going to talk about the impacts of the authorized version of the Bible. And the most important thing is that कि हमें इसके references तकरीबन हर एक जो है वो राइटर से मिल जाते हैं। Bible was imagination, meditative imagination, ये वर्ड्सवर्थ को लगता था इमरान साहब। जॉन ड्राइडन की एक बड़ी मशहूर जो है वो सैटिरिकल राइटिंग है, एब्सलम एंड अकीचोफिल। मैं अक्सर इसका जिक्र किया करता हूँ। उसमें भी हमें बाइबल का रेफरेंस मिल जाता है। रस्किन की राइटिंग्स में हमें बाइबल का रेफरेंस मिल जाता है, ठीक है। अनटू दिस लॉस के अंदर हमें जो है वो अनटू दिस लॉस इन इटसेल्फ जो है वो एक बिब्लिकल फ्रेज है। किसने लिखा था अनटू दिस लॉस? अनटू दिस लॉस किसका लिखा हुआ है? ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अनटू दिस लॉस किसका लिखा हुआ है, या अनटू इट्स लॉस किसका लिखा हुआ है? जॉन रस्किन। And the very title is a biblical phrase. So हमें ये पता चलता है कि बाइबल से इंग्लिश लिटरेचर में कम से कम 50 के करीब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो वर्क्स हैं जो कि इसके साथ हैं। डेफिनेटली इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि उन 50 वर्क्स को जो है वो पिन पॉइंट किया जाए, लेकिन जो है वो हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए। तो हमें ऑथराइज्ड वर्जन ने एक चीज को किया था कि उसने जो एक सुपरफिशियल सतह पे चीजें होती थी उनको चेंज कर दिया। सो एलेगोरिकल जो चीजें थी, जितनी भी एलेगरीज आती थी और जितनी भी एलेगरीज पे काम होना शुरू हुआ था, इन तमाम चीजों को बड़े ढंग से जो है वो हमें ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल से रेफरेंसेस मिलते हैं। इसमें एक कोटेशन को कोट कर लीजिएगा, इफर एवन की कोटेशन जो है वो, इफर एवन जो है वो लिखते हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बड़ी अच्छी किताब लिखी। द लैंग्वेज ऑफ ऑथराइज्ड वर्जन के बारे में इनको ये लगता है कि ये एक नेशनल ट्रेडिशन बन गई इंग्लैंड के अंदर, कि उनको ऐसा लगता था कि ऑथराइज्ड वर्जन के आने के बाद उनका कोई ऐसा एक पोजीशन मिल गया, उनका एक ऐसा जो है उन्हें प्रीशियस पोजीशन मिल गई उस चीज की जो कि उनकी गुम हो चुके थे। So in this way, you're going to justify the answer of this question, that what were the impacts of the authorized version of Bible on English literature. So you may look at a lot many other names, but these names should be there because when you're talking about Ruskin, Scott, Swift, Bunyan, you can easily look at the references. So my next question is कि किसको आपको ये क्लियर हो चुका है, किसको समझ नहीं आया इसका? 76. How you're going to take this this question? Is it clear? I'm waiting for your answer. You're just supposed to mention clear in the chat box so that हम proceed further करें आंसर आगे। अच्छा जी, ठीक है। Okay. Then we have another question, that is question number 77. But before that, I would like to remove these two questions so that we may have some space for the next question. Okay, the next is, what are the effects of the authorized version of Bible on English thoughts? A completely different question. In previous question, we were talking about the English literature, but this time we are talking about the English thought. So what do you feel when we talk about English thought? English thought से आपके ज़हन में क्या आता है? How you are going to define English thought? English thought से आपके ज़हन में क्या आता है? How you are going to define English thought? इंग्लिश थॉट से आपके ज़हन में क्या आता है? कुछ भी ज़हन में नहीं आता। ओके,
Beliefs of English people. All right. What's about those people who are silent and they're not writing? Well, you need to understand कि जब जो है वो authorized version of Bible आता है, society के ऊपर क्या impact करता है? Ultimately, your writers they are the part of your society. So Bible जो है कि was it changing their customs, lifestyle and beliefs and all those things or not? So हमारे पास जो है वो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सिर्फ थॉट को डिफाइन कीजिए. What do you feel कि थॉट्स जो हैं इसको हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है, so that you can understand the question. थॉट जो है, थॉट के आपको क्या लगता है कि थॉट की डेफिनेशन क्या होगी? आप इसको किस तरह से परसीव करते हैं? एक्सप्रेशन. वेरी गुड हानिया. यस. ओके. देखिए हमने जो इसका बिब्लिकल रेफरेंसेस के मुतालिका तो हमने चीजें देख ली, लेकिन अब हमारे पास ये भी है कि किंग जेम्स की बाइबल इतनी पावरफुल है कि वो 400 इयर्स के बाद, इवन उसके बाद अभी भी इसको जो है वो ये समझा जाता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसलेटेड वर्जन. सो इसका जो इन्फ्लुएंस था, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू जस्ट ट्रांसलेट द इन्फ्लुएंस इन अ सिंगल वे. सो द लैंग्वेज ऑफ द बाइबल वाज डिफरेंट वन, और डिफरेंट होने की वजह ये है कि ये फोर्सफुल लैंग्वेज है, और हमारे पास फोर्सफुल होने की वजह ये है कि इवन 1950 में 1950 के अंदर भी किंग जेम्स के जो वर्जन है, केजेवीबी से कहते हैं कि इसको एक ऐसा सोर्स समझा जाता है जो कि पावरफुल कल्चरल कंडीशंस है, कि एक ऐसे हमारे पास कल्चर ओरिएंटेड है, एक ऐसी लैंग्वेज देने वाला, एक ऐसी लिटरेरी टर्म्स देने वाला, एक ऐसा लिटरेरी इन्फ्लुएंस देने वाला, और एक ऐसा इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के अंदर इन्फ्लुएंस छोड़ने वाला ये सोर्स है कि जिसको हम रूल आउट नहीं कर सकते. सो केजेवी या हमारे पास किंग जेम्स वर्जन जो है, ये हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेशन वर्जन है जिसने ओवर टाइम डिफरेंट ऑथर्स को देखा. सो जब आप इसकी इंग्लिश थॉट पे बात करेंगे, you will talk about the power, you will talk about कि इंग्लिश ट्रांसलेट वर्जन का पर्पस क्या था, क्या इसने सोसाइटी का एक्सप्रेशन कैसे चेंज किया. एंड द सोसाइटी, जब आप एक्सप्रेशन की बात करते हो, याद रखो वी आर लिविंग इन अ मुस्लिम सोसाइटी. सो हमारा एक मुस्लिम बिलीव है, हमारी गाइडलाइंस हैं कि हमें किस तरह से पब्लिक में रहना है, हमें किस तरह से जो है वो प्राइवेटली रहना है. तो इन लोगों के पास भी पब्लिक वर्शिप, प्राइवेट लाइफ, सारे का सारा स्पेक्ट्रम इनके पास चेंज होता चला गया. क्योंकि अब मैंने बताया कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, तो टोटल जो है वो 83% ऑफ टेक्स्ट उसने बोरो किया था. न्यू टेस्टामेंट्स में से 83% जो है वो न्यू टेस्टामेंट्स में से था, और 79% ओल्ड टेस्टामेंट में से था. ठीक है. सो हमारे पास इसमें से इसने ट्रेडिशंस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट किया. इसको जो है वो सीक्रेट टेक्स्ट समझा जाता था. इसको प्रोज राइटर्स ने ट्रेयर हाउस समझना शुरू कर दिया. इसमें से मैक्सिमम कोट्स को लिया गया. इसको वर्शिप किया जाता था डेली बेसिस पे. लोग इसका गाइडलाइंस देना शुरू हो गए थे, और लोगों को ये लगता था कि दैट इज द बेस्ट वर्जन, और वो अभी तक ट्रेवल चल रहा है. सो एक सारी की सारी सोसाइटी को अगर हम ये कहें कि इसने रीशेप कर दिया है, या रीशेप कर दिया था, तो इट इज नॉट द रॉन्ग आंसर. सो आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन की जो है वो आपको समझ में आया कि किस तरह से हमारे पास ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जो थी, इसने इंग्लिश थॉट को तब्दील किया. सो इज इट क्लियर, so that I may proceed further? I'm just waiting for the answers. You are just supposed to write here in the chat box. Next, we have the question that is very easy question about the Cavalier poets. You know, we call these poets Cavalier poets just because of Charles I. And who was Charles I? When you will answer any question in your interview, remember you have this very tendency to take or mend the wheels of your questions. So in case you're going to talk about Charles I, that Cavalier poets were called Cavalier after the name of Charles I, because there was
something that they were associated with this particular king. You need to memorize some details about Shaswan. The tenure of Shaswan is important. Whatever was going on from 1625 till 1649 was important. So you need to talk about the lyrical activities, you need to talk about the academic activities, and whatever Shaswan was doing, you need to talk about all those things. Remember one thing, there is no need to directly define failure poets. You need to talk about that why there was a need of failure poets. It was basically the product of Caroline period. So Caroline period के अंदर whatever was going on, ये लोग वो लोग थे कि जिनकी जो है वो leaning से king की तरफ, तो ये वो लोग थे कि जिनकी जो है वो king के साथ association थी. So और इनके साथ क्या था, यहाँ इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ये आप प्यूरिटन्स के अगेंस्ट है. आप जानते हैं कि चार्ल्स फर्स्ट जो है और उसका जो है वो बाद में हमारे पास ओलिवर क्रॉमवेल की सिचुएशन में, जो प्यूरिटन जब आए थे पावर में 1642 में, जब थिएटर्स बंद हुए, और जो सारी सिचुएशन इसकी बेआइडेड में इसका एक इंसिडेंट दैट इज वेरी फेमस वन. सो आपको क्विलियर पोइट्स के मुतालिक बताना है तो उनकी पोइट्री के बारे में बात करोगे. आप जो है वो ये भी बताओगे कि इन्होंने ट्रेडिशन से किसमें से हट गए थे, बिकॉज दे वर नॉट इन्वोकिंग म्यूजिक, वो बिल्कुल म्यूजिक से हट गए थे. तो वो इसको जो है वो प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज नहीं करते थे. उनकी एक ही चीज थी उनके ब्लड में, और वो थी रॉयलिज्म. रॉयलिज्म से क्या था कि वो रॉयलिज्म जो है उसको रखते थे कि हमारी एफिलिएशन किंग के साथ है. क्विलियर पोइट्स में हमारे पास जो है वो नाम आते हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा अपनी एसोसिएशंस को, एफिलिएशन को किंग के साथ रखा. नाम तो आपको आसानी से मिल जाएंगे कहीं से भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी है आपने. क्विलियर पोइट्स जो हैं, जब इनकी आउटपुट क्या थी, ये जब लिखा करते थे क्विलियर पोइट्स जो हैं, देखिए क्विलियर पोइट्स की जब आप बात करेंगे, आप एक क्लास की बात करते हैं, आप उन लोगों की बात करते हैं कि जिनके अंदर कोई खास किस्म की क्वालिटीज होती हैं, और वो लोग जो हैं वो दूसरों से डिसकंसर्न हो जाते हैं. हमारे पास जो है यहाँ पे हमें ये भी बताने की जरूरत है, क्विलियर पोइट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता था, वो वेल डिफाइंड इंडिविजुअल्स है. ये वो लोग होते थे जिनको ये लगता था कि हमारा एक अपना इंडिविजुअल अप्रोच है, हमारी एक अपना इंडिविजुअल फ्लेवर है. सो these people when they are going to talk about their individualness और अपनी चीज किसी एक खास टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास जो है वो क्विलियर आते हैं. और हमारे पास जो है वो इनके रॉबर्ट हैरिक को देख लीजिएगा, रॉबर्ट हैरिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम. टॉमस कैरियो को देख लीजिएगा, और एक दो और मैं आपको नाम बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए. रिचर्ड लवलेस को देख लीजिएगा. ये तीन नाम है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनको ढंग से पढ़ने के बाद जाइएगा. सो वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने रॉबर्ट हैरिक बताया, टॉमस कैरियो बताया और रिचर्ड लवलेस बताया. जॉन सक्लिंग को मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया. सो दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो जब इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, देयर इज नो नीड टू टॉक अबाउट कि आप सिर्फ इन सारे के सारों की बात करोगे. आप सिर्फ बात करोगे और कोशिश करोगे कि अपने क्वेश्चंस को उसी डायरेक्शन में लेके जाओ कि जिसमें आपको पता है कि जो अगला क्वेश्चन इसमें से क्या निकल सकता है और उसको आपने टैकल कर सकता है. ठीक है, चूंकि ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है तो मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ. अगर इस पे आपका कोई और क्वेश्चन या कंसर्न है, you are supposed to go for escalation. You may write your question there in the chat box. If it is clear, you are requested to write clear in the chat box. The next question is about John Milton. Well, remember, John Milton is different than other writers. कोई राइटर जब भी लिखता है ना, तो तभी पता चलता है कि वो कैसा राइटर है, उसका असर कैसा. देखो आपके जो जितने भी राइटर्स थे, दे वर नॉट लिविंग इन वैक्यूम, मैं अक्सर कहा करता हूँ. जॉन मिल्टन जो है उसके ऊपर दो तरह के जो है वो असरात हमें नजर आते हैं. पहला असर उसके ऊपर आता है रेनेसांस का नजर, दूसरा असर उसके बाद ऊपर आता है हमें रिफॉर्मेशन का नजर. ये दोनों वर्ड्स ही देखें, अगर आप इसकी जरा गहराई में जाके देखें तो आपको पता चलता है कि रिफॉर्म करने का क्या मतलब होता है. जब कोई रिफॉर्मर होता है ना, वो क्या करता है. रेनेसांस का क्या मतलब होता है, जब कोई तब्दीली लेके आता है.
अब दोनों तरह के रेनासांस और रिफॉर्मेशन के इम्पैक्ट आते हैं जी इंग्लैंड पे। ये कहानी है 16th सेंचुरी की। सो अब लगता तो यही है कि शायद ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। किस तरह से एलिज़ाबेथन एज जो हमारे पास आती है, एलिज़ाबेथन एज डायरेक्टली आती है क्लासिकल या कह लीजिए ह्यूमनिस्टिक इन्फ्लुएंस के अंदर, कि इंसान को सेंटर में रखना है, इंसान के ऊपर ज्यादा बात करनी है। यही बात है, आप देखें क्रिस्टोफर मार्लो के हीरोज की बात कर लें, विलियम शेक्सपियर के हीरोज की बात कर लें, सब के सब इंसान है, सेंटर ह्यूमन है। जो सेंट्रिक अप्रोच है वो ह्यूमनिज्म है। सो जहां पे सेंटर इंसान है, सेंटर ह्यूमन है, तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लुएंस जो है वो ह्यूमनिस्टिक इन्फ्लुएंस वहां पे चल रहा है। लेकिन जो रिफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस था, उन्होंने, मार्लो ने, शेक्सपियर ने, इन लोगों ने इसको अपने ऊपर उस तरह से नहीं आने दिया। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की बात कर लो एलिज़ाबेथन एज से, वो एक ऐसा पर्सन था जिसने रिफॉर्मेशन को और रेनासांस, जो दोनों मुख्तलिफ मूवमेंट्स हैं, किसी हद तक इनको करीब करीब लेके आने की कोशिश की। ठीक है। और एडमंड स्पेंसर हम जानते हैं, एडमंड स्पेंसर का एक बड़ा मशहूर और मरूफ काम है। डू यू नो द नेम ऑफ द वर्क, द मास्टरपीस ऑफ एडमंड स्पेंसर, जिसके लिए वो बड़ा मशहूर है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ approximately all the universities, the syllabus of approximately all the universities of in Pakistan. What is the name of that work? That is a fairy queen. अब फेरी क्वीन जो है वो एलेगरी है। एलेगरी क्या होती है? सरफेस पे कहानी कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये बेसिक बातें हैं, जरा गहराई वाली बातें करते हैं। अब वहां पे वो सेलिब्रेट कर रहा है चर्च ऑफ इंग्लैंड को, और क्या कर रहा है? कंडेम कर रहा है हाइपोक्रेसीज को। जब वो ड्यूजिया की बातें करता है, आर्किमेगो की बातें करता है, तो ये वो यही काम कर रहा है। मिल्टन ने किस तरह से, हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि जो आप बताएंगे। देखिए, मिल्टन जो है वो एक ऐसा पर्सन है जिसकी स्पिरिट दूसरों से डिफरेंट है। मिल्टन जो है वो एक ऐसा पर्सन है जो अपना पैटर्न देता है। आपको पता है कि मिल्टोनिक जो है वो हमारे पास एक जहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग स्कीम्स आती हैं, तो हमारे पास जो है वो राइमिंग स्कीम्स के अंदर भी जो है वो हम ये देखते हैं कि मिल्टन अपने पैटर्न के ऊपर चलता है। मिल्टन 17th सेंचुरी में जो चीजें करता है वो डिफरेंट करता है। तो मिल्टन ने कुछ चीजों को जो है वो मिक्सअप करने की कोशिश की। इसने रेनेसांस से आइडियल्स ऑफ पोइट्री को उठाया और उनको क्लासिकल मोल्ड के अंदर जो है वो क्लासिकल शक्ल के अंदर उनमें तब्दील कर दिया। सादा लफ्जों में बात करते हैं, मिल्टन एक ऐसा पर्सन था जिसने जो भी पोएम्स लिखी वो क्लासिकल फॉर्म्स के अंदर लिखी। मिल्टन एक ऐसा पर्सन था जिसने जब लिखता है, आप जानते हो कि मिल्टन जो है वो एक मूवमेंट के साथ था। ये ओलिवर क्रॉमवेल का बड़ा अच्छा दोस्त था। और मिल्टन किस मूवमेंट के साथ था? मिल्टन क्या था ये? आपको क्या लगता है कि ये प्यूरिटन था? यस, नो? मिल्टन वाज प्यूरिटन और नॉट? तो यस, ही वाज। सो मिल्टन ने दो तरह की फॉर्म को जो है वो जोड़ा। मिल्टन जो है वो, जब हम बात करते हैं कि मिल्टन की प्यूरिटनिज्म की, तो मिल्टन की प्यूरिटनिज्म का मतलब भी यही है कि वो रिफॉर्मेशन की प्रोडक्ट है। और जब आप बात करते हो इसकी हेलेनिज्म की, हेलेनिज्म का मतलब है कि ये रेनेसांस की प्रोडक्ट है। मिल्टन एक ऐसा पर्सन था जिसने प्यूरिटनिज्म को और हेलेनिज्म को, दोनों को हार्मोनाइज कर दिया, जिसने दोनों को मिक्सअप करने की कोशिश की। ठीक है। और मिल्टन की पोएट्री हमारे पास जो है, हम इसमें देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है कि मिल्टन जब लिखता है वो डिफरेंटली लिखता है। प्यूरिटन, आप जानते हैं कि वो थे कि जो प्रोटेस्टेंट थे, वो प्रोटेस्ट करते थे। तो आ, उनका जो है वो एक प्रोटेस्ट था, पोप के अगेंस्ट था, रोमन कैथलिक्स के अगेंस्ट था। तो हमारे पास इन दोनों मूवमेंट्स की आप जो है वो बात कर रहे हैं। सो यस, ही वाज। और इसके अलावा रेनेसांस एलिमेंट की जब आप बात करेंगे, रेनेसांस की आप जो है डेफिनेशन पहले बताएंगे, ग्रीको रोमन के रेफरेंसेस की बात करेंगे, और देन आप बताएंगे कि जब मिल्टन ने 1637 में अपनी जो इसके जो फ्रेंड था, आई थिंक डियोडटी नाम था शायद उसका, उसके लिए जब ये लिखता है, तो उसके अंदर हमारे पास रेनेसांस, DEODATI, डियोडिटी, उसके अंदर हमारे पास रेनेसांस के एलिमेंट्स नजर आते हैं। सो
मिल्टन जो है इसकी एलेग्रो पढ़ लें और या इसके जो है वो दूसरे वर्क पढ़ लें, लाइसिडिस पढ़ लें, तो हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास एक ब्लेंड देता है। पैराडाइज लॉस्ट से आपको डिफरेंट रेफरेंसेस जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है जी। सो यू नीड टू टॉक अबाउट दीज टू मूवमेंट्स, और आप तभी बात कर सकोगे जब आपने सेशन के एंड पे आपने देखा हो रिफॉर्मेशन क्या है, रेनासांस क्या है, जॉन मिल्टन किस एज से था, आपको पता होना चाहिए ओलिवर क्रॉमवेल कौन था, मिल्टन का ओलिवर क्रॉमवेल के साथ क्या रिलेशनशिप था, और जब जो है वो हुकूमत वापस आती है चार्ल्स the सेकंड की जो है तो 1660 में, तब मिल्टन के साथ क्या सलूक किया जाता है। आपको जो है वो रिजिसाइड का पता होना चाहिए कि रिजिसाइड्स क्या थे, किस किस तरह से साइन किए गए थे, और मिल्टन को क्यों स्पेयर कर दिया गया था, और ओलिवर क्रॉमवेल की ग्रेव को क्यों ओपन करवा के उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। ठीक है। सो ये चीजें जो है वो आपको काफी हेल्प देंगे। सो आई एम श्योर कि मैंने क्वेश्चन नंबर 79 के मुतालिक आपको इनफ रेफरेंसेस दे दिए दैट हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, और आपको किन किन चीजों को देखने की जरूरत है। The last question is about the autobiographical elements in Milton's work. Remember, मिल्टन के बारे में आपसे जो है वो काफी चीजें पूछी जाएंगी। मिल्टन को इग्नोर ना किया इस वजह, दैट्स माय सजेशन। सो मिल्टन जो है, sometimes we say that perhaps it is like a paradox. Whenever we talk about मिल्टन वॉज ए पर्सन कि जिसको हमें उसके वर्क में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑटोबायोग्राफिकल फ्लेवर मिलता है। ऑटोबायोग्राफिकल फ्लेवर आप जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बाय द वे ऑटोबायोग्राफी होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोबायोग्राफी? ओके, गुड हानिया। देखिए, हानिया के अलावा शायद किसी को नहीं पता when you are going to talk about autobiography, so when you are talking about your own self, ठीक है। देखिए, एक चीज इससे पहले मैं ये आपको बताऊं, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि क्लासिकल पोइट्री के बारे में और रोमांटिक पोइट्री के बारे में एक फर्क समझ लीजिएगा। ऑथर की ऑटोबायोग्राफिकल नेचर के ऊपर बात करने से पहले एक फर्क समझ लीजिएगा कि रोमांटिक पोइट्री जो होती है वो क्या होती है, और क्लासिकल पोइट्री जो होती है वो क्या होती है। रोमांटिक पोइट्री एक ऐसी पोइट्री होती है जो सब्जेक्टिव होती है, जिसके अंदर आप चीजों को में खुद को इंक्लूड कर सकते हो। क्लासिकल पोइट्री एक ऐसी पोइट्री होती है जो ऑब्जेक्टिव होती है, कंटेंट के लिहाज से भी, एग्जीक्यूशन के लिहाज से भी। रोमांटिक राइटर्स जो होते हैं ना, वो अपनी पर्सनालिटी को जाहिर करते हैं अपने काम के अंदर से वो। लेकिन क्लासिकल राइटर्स जो हैं, जब वो लिखते हैं वो जनरली सच लिखते हैं, जनरल ट्रूथ लिखते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं लिखते हैं कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ठीक है वो ट्रूथ ना हो। तो अपनी जो पर्सनालिटी को छुपा के रखते हैं क्लासिकल पोएट्री के अंदर, लेकिन रोमांटिक में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे मैं वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड की बात करूंगा, तो 1805 में पब्लिश हुई वो एक ऑटोबायोग्राफी, जिसमें वो अपने दिमाग की डेवलपमेंट की बात करता है और वो बहुत से चीजों को अनवेल कर रहा होता है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो अलेक्जेंडर पोप का रेफरेंस मिल जाता है एसे ऑन मैन का, और एसे ऑन क्रिटिसिज्म का। अलेक्जेंडर पोप आप जानते हैं न्यू क्लासिसिज्म में कि इसका बड़ा अच्छा खासा नाम है अलेक्जेंडर पोप का, जॉन ड्राइडन के बाद, और इसको बाद में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इस मूवमेंट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन असल में ये कहानी सुनाना बताना क्यों जरूरी है? हम तो मिल्टन की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हजूर वाला आपको समझने की जरूरत है कि मिल्टन जो है वो कैसा लिखा। मिल्टन एक क्लासिकल पोइट है, जो मैं इस सारी की सारी बात आपको बताना चाह रहा था ना, ये स्टोरी जो है वो। देखिए, मिल्टन एक क्लासिकल पोइट है, लेकिन मिल्टन जो है वो क्लासिकल पोइट सामने देखे हैं कि वो अपने आप को अनवील नहीं करते हैं, वो तो अपनी पर्सनालिटी को वील रखते हैं। लेकिन मिल्टन जो है वो क्या करता है, अपने काम के अंदर खुद को पुट करता है। एंड वंस अगेन, आई एम नॉट रेफरिंग टुवर्ड्स हिज प्रोज वर्क, ठीक है।
सो इसके प्रोज वर्क्स आप जानते हैं, पैम्फलेट्स की फॉर्म में ज्यादातर हैं, लेकिन मिल्टन जो है जब इसके थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसने जो है वो अपनी पर्सनालिटी को दूसरे क्लासिकल की तरह हाइड नहीं किया। तो हम जो है ये एक डिफरेंस है जो दूसरों से हट गया। इवन हमारे पास जो है वो आप जानते हैं ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिल्टन ऐसा करता है। मिल्टन के अगर आप जो है वो चंद एक वर्क्स को जो पढ़ें, ली एलेक्ट्रो को पढ़ लें या पेंसरो को पढ़ लें, आप इसके जो है वो कॉमर्स को पढ़ के देख लीजिए, लाइसिडीज को पढ़ के देख लीजिए, आप इसको पैराडाइज रीगेन्ड को पढ़ के देख लीजिए। पैराडाइज लॉस्ट बड़ी मशहूर मरूफ नज़म है, बच्चे बच्चे को आती है। उसमें से एक रेफरेंस आपकी गोश गुजार करना चाहूंगा जो समझने की कोशिश कीजिएगा। ओ व्हाई डिड गॉड creator wise that peopled highest heaven with spirits masculine create at loss this nobility on earth, this fair defect of nature man has to suffer, and you need to mention these references there. So मिल्टन जो है वो अपनी पर्सनालिटी को मेंशन करता है, मिल्टन जो है वो इस पर बात करता है। So autobiography को आप mention करोगे, you will take maximum references from these points. एक जो है वो इसका काम पैराडाइज रीगेन्ड आप पढ़ेंगे, पैराडाइज लॉस्ट में से रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको इसकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। और देखिए मिल्टन जो है गॉड के बारे में जो इसका फेथ था ना, उसके ऊपर एक बड़ी क्रिटिसिज्म है। Just are the ways of God and justifiable to man unless there be who think not God at all. ये क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, सैमसन ने लिखी थी कुछ लाइनें। So मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले you need to talk about romantic and classical poets. Then आपको proceed further करना चाहिए रेफरेंसेस के साथ पैराडाइज लॉस्ट में से, पैराडाइज रीगेन में से, और इसके जो है वो लाइसिडीज में से, कॉमर्स में से। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगी आपके आंसर के हवाले से। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो आज के 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, मैंने ढंग से आपको गाइड किया कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं तो आप किस तरह से इनके आंसर्स को देंगे। So यहाँ तक क्लियर है। We have a MOOC session, MOOC interview today, the interview of Miss Hania. So अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो हम अपने इंटरव्यू की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। Okay, thank you so much. Okay, so we have Miss Hania with us today. Okay, Miss Hania, you are requested to unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, you are, Hania. How are you, Hania? I'm fine, sir. What about you? Thank you so much. I'm perfectly fine. I'm good, alhamdulillah. So, Hania, should we proceed further with the formal discussion? Yes, sir. Okay. So your name is Hania. What do you? Uruba Shafiq. Hania, what is the meaning? My name is Uruba Shafiq. I'm known by the name of Hania because it's my second name. So all my accounts, they are by the name of Hania. But my real name is Uruba Shafiq. Okay, so we should call you by your nickname or by your real name? So only for this interview, you can call me Uruba and then Hania. What is the name of your last degree, Miss Aruba? So the name of my last degree is the English Literature and Linguistics, BS in English Literature and Linguistics. What is the definition of literature? So literature is basically the subjective study of life. It's literature is something in which the writer wants to depict his emotions, and it's basically a form of written work, but it's subjective in nature, which means that the author depicts his own personality through his work.
So if something is not subjective and if something is not in written form, we cannot call it literature as per this definition. No, we can't say, because the poetry, the earlier poetry was in the form of oral tradition and still it was literature. But basically, we say that it's a form of written work. Either it's in verse form or or in written form. But and subjectivity is also optional, because essays sometimes they're objective, but still they are included in literature. But that's what differentiates it Well, from natural sciences. Natural sciences are objective. you have mentioned the term poetry, Miss Hania, so Yes, I'm sir. sure, and you have talked about the origin of the poetry. My question is that what is the first name of English poem? So the name of the first poem that we know is Beowulf. That is, Beowulf by Anonymous. okay. So that is the first English poem. Yes, sir. What we know from the sources that the first poem that we have at the end of the 6th century or from the start of the 7th century, that's Beowulf. Okay, all right. And in which century this poem Beowulf was written, and what is the name of the writer? So it's the writer is not known. It's anonymous, and it was written in 7th century. Mhm. Okay, so Beowulf is an epic poem. Yes, no. Yes, sir. Okay, so Beowulf is talking about a tradition. What is that tradition actually? So the Beowulf is talking about the tradition of the old times, when there used to be the feasts in the halls, and it was all about chivalry. Chivalry. There is a knight who comes to the rescue of the nation, and who saves the world. That's what epic poetry is all about. It focuses on the heroic deeds of a hero who is larger than life, not like an ordinary being having Hmm. strength of Okay, many fair different. enough. So, Hania, where the story of Beowulf is happening, in which country? The name of the country is there in the poem. I think it's in Scotland. No, it is not. I think I have forgotten the exact The place. name that is there in the poem actually. Maybe you're talking about the recent name, but I'm referring towards the name that is there in the poem. Okay, just talking about the hero. What is Beowulf is definitely the hero, but the hero of which state, which country he is representing? Scandinavia, but I'm not sure. Mhm. Okay, you need to revisit the details, I think. Okay, yes, sir. Talking about your favorite genre, Miss Hania. So, what are your hobbies, by the way? Before talking about your favorite genre, what do you do in your leisure time? So I like watching dramas, but obviously you said that you can't mention that. So I will say that I like reading, but specific reading. Like I like reading Urdu novels and English poetry. What is the name of the specific Urdu novel that you have recently completed? Recently, um, Yeah. can't recall the recent one, but I just love Pire Kamil by Umaira Ahmed. And I, whenever I feel depressed, when I'm not in the mood, so I just go and read Pire Kamil again. So that's why it's the recent one. Piri Camel. Don't you think Yes, that Piri Camel, the title is talking about the perfect mentor? yes, Piri sir. Camel is the Exactly. meaning of. The So, who perfect is that mentor. perfect mentor? It's our holy prophet, peace be upon him. Okay. How do Yes, you sir. see the character of Salar, Ms. Toba? Don't you feel that Omar Ahmed, while mentioning the details of Salar Sikandar, she's exaggerating the details? How it is possible to have an IQ of more than 150? So it is. Don't you think it's just a fictitious story? So obviously, first of all, it's a fictitious story. Hmm. But what makes Pire Kamil so fascinating, so interesting, is just because of that fictitious character of Salar Sikandar.
more than Imama Hashim, it's Salar Sikandar who fascinates the readers, especially the women readers. I can say so, definitely, because Salar Sikandar is a very complex character. He's shown to be a man who has a very, very high IQ level, having IQ level of more than ordinary people. But that's what makes him. What do you use about Imama Hashim? Imama Hashim is a strong lady. I like her character. The way she took stand for herself, for not for herself, for her religion, because she was shown as someone who was not a part of Muslim religion, the religion that we follow. She was shown to be for different sect. So how Okay, she just in a single mention mhm. the theme of Piri Kamil. The single theme. What is the It's theme of Piri Kamil? so the theme is the search for the perfect mentor, and for that, first of Oh, all, you that have is to the search your own that, self. that is the explanation of the title. There's no the theme. Yeah. What is the theme of the story? What is the theme of the novel? Why Umar Ahmed jotted down this whole long novel? So I think it's just a journey of the self, how a person should discover himself, even if he's lost. So how he can go back in the right direction. All right. So, Yes, how many sir. books by Umar Ahmed you have covered so far? Because you have mentioned that you have completed PA Kamil, so I'm sure that you have read other books. Sir, I can't mention the exact, but I can say that I have read Umaira Ahmed's Pire Kamil, and then there is a sequel to it, which is Abe Hayat. So I have read that. I have also read Zindagi Gulzar Hai, Meri Zaat Zarre Benisha, Aks Hasil La Hasil, different. So, have I you use read them in Mumtaz college time. Mufti? Yes, sir. Have you read any book of Mumtaz Mufti? No, sir. Have you read Yeah. Ali Pulka Ali? No, I have read Umaira Ahmed and Nimra Ahmed. So, as you're interested, as you have mentioned, your hobby is reading Urdu novels. So, I'm sure that you know the names of those people who are from Pakistan and they are writing in English. So, mention just the name of 6 Pakistani writers who are contributing in English or writing in English. Okay, so Bapsi Sidhwa, Mm-hmm. and the short story Tariq Rahman, who has written the charity Tariq Rahman. Mm-hmm. There are many, but I Okay. can't recall right now. But you're supposed to mention just the 6. I know there are lots many, but you're supposed to mention. Yes, sir. Okay. Okay, sir. I think one there is Aziz Ahmad, and The Return of Jinaz. I don't remember who is written. Aziz Ahmed. Yes, sir. Aziz Ahmed is writing in. Okay, I think that you're talking about Khurshid I'm Kamal talking. Aziz. I'm just trying to recall who has written The Return of Jinnah, The Return of Jinnahs, but I can't recall that name. There are many famous ones. Perhaps you forget to mention the name of Mohsin Hamid, Yes, Muhammad sir. Hussain, Mohsen Muhammad Hamid. Hanif, Yes, sir. Tawfiq Rafat, Moni Mohsin, Ali Muhammad Rashdi, Sadiq Saleh, Ali Sethi. There are a lot Yes. many, Kamna Shamsi. So these people, they're contributing, and Bapsi Sidhu obviously outshine all these names. Okay, so what do you feel about the reluctant fundamentalist by Mohsin Hamid? As you're interested in Urdu novels, so I'm sure that you have read the reluctant fundamentalist by Mohsin Hamid. No, sir. I'm sorry, but I haven't read this specific. So any other writings from these writers that you Yes, sir. may I have read list? Ice Candyman by You have, Bapsi Sidhwa. okay, you have read Bapsi Sidhwa. Talking about Bapsi Sidhwa, don't you feel in Pakistan, Bapsi Sidhwa, born somewhere in 1938? Okay, so she was not a Muslim, but she preferred to reside there in the United States. Do you feel the minorities are safe in Pakistan? Why Bapsi Sidhwa, she been the resident of United States of America?
So the minorities are not saved in Pakistan. We can see it's some of the themes that the writers who are representing the Pakistani, the minority in Pakistan, they have represented. Also, there are certain elements in this novel also. In the Ice Candyman, we can Okay. see that the family Ania, there's a is movie shown. based on The Ice past, Candyman. yes, sir. That's a movie. What is the name of that movie? It's The Earth featuring Amir Khan. Oh, yes, it is. So, any idea when this movie was released? No, sir. I don't remember. Okay, okay, no worries. So, Ice Candy Man, what is the significance of this title, The Ice Candy Man? So the Ice Candy Man, actually it refers to the character of, there is a character in the story, the protagonist. We can't say protagonist because somehow he's shown to be an antagonist also at the end of this novel. So Ice Candy Man refers to that character. There is a Muslim character who sells ice candies in the summer season. So referring to that character, Ice Candy Man. Mhm. What is the But it's theme of not the first title. this novel? What is the theme of this novel, Ice Candy Man? There are many themes, but the basic theme is the theme of partition, the partition of Pakistan and India. That was the Mhm. fundamental theme. And there are That's very different good. other Since we are yes, sir. talking about the partition, so I'm sure that you have read the Khushwat Singh, The Train to Pakistan. That is talking about Khushwat Singh is talking about the same partition. So, do you know the details of the Train to the Pakistan by Khushwat So Singh? I will definitely go through the train to Pakistan. I have to read it, but still I haven't searched it. But similar to this, the theme of partition and basically this the partition of India and Pakistan. I have read a short story of Sadat Hassan Mantu. That's Toba takes in. It's also highlighting the same thing. Hmm. Well, Sadat Hasan Mantu is very interesting character. So you have mentioned. So how many works or books of Sadat Hasan Mantu you have read? Only this one. I haven't read Pakistani literature much, sir. So you're not interested in Pakistan literature. Oh, no, I'm not really interested in Pakistani literature. So don't you feel that it is a strange thing that a person who is going to be a lecturer in Pakistani colleges and universities, he or she is not interested in his own or in her own literature. So in this way, he or she is not going to contribute anything. So literature, we know William Shakespeare, we know England and all those people because of their Yes, sir. literature. In case we want to read William Shakespeare, we will have to learn English language. So, Yes. don't you feel that it's not justice that if a person, you are the future of the nation, so if you are going to say, if you are claiming that you're not interested in Pakistan literature, then how it is going to be a rational choice that we should take you on board for this particular post? So I think you're right, whatever you are saying, but basically I was too much absorbed Mm-hmm. throughout my studies, BA studies in British literature. Mm-hmm. They occupy us so much in studying the British literature, go through the poetry and dramas and novels of the British. And after that, after my graduation, I was personally, I thought that for my interview, I should prepare for American literature also. So that was a second option for me. And then I have started reading American literature, and the third one is of course Pakistani literature. The why I haven't developed the interest is because obviously I haven't read it. I have read Pakistan the Urdu novels, and I just love it. All the Urdu novels in Pakistan, but I haven't explored that side because I was reading British literature. That's the reason, sir. Okay. What do you know about Salman Rushdie? Salman Rushdie is also a writer who is writing in the Pakistani literature, but don't know much about him. What is the nationality of Salman Rushdie? Because Salman Rushdie been the part of news, when the part, a lot many news pieces of news were circulating about Salman Rushdie. So, what is the nationality of Salman Rushdie? Sorry, sir, I don't know that. Okay, I'll so explore Hania, more. what is your favorite genre that you have prepared for today's interview?
Poetry is my favorite genre. Why poetry? Why not drama? Why not novel? Why specifically Poetry is much easy to read because it's sometimes it's shorter as compared to plays and novels. They are comparatively big, so it takes much time. And I have, because I was teaching poetry, classics and English poetry at my college, the college where I'm teaching and as visiting lecturer. So that's why I That's very covered. great that you are teaching poetry. Since you are interested in poetry, so my question is about some basic terms. My first question is about alliteration. Can you give a single Okay, example of alliteration? alliteration is the repetition of the similar consonant at the start of a line. For example, the Peter, there is an example of this PP sound and in a line, but I Okay, can't recall it. fair enough. Yes, sir. What do you understand how you're going to define injabment? Injumpment. Injabment. Hmm. I have read it, but don't remember, sir, right now. And your favorite genre, and you have prepared poetry. So last question is about apostrophe. What is the definition of apostrophe? So apostrophe is a literary device which is used by the author in addressing the something which is absent or something non-living. Okay, partially true. Yes, it is. Someone who is not. In apostrophe, we have two levels of meaning, one stated and one unstated. So, any example of apostrophe? Yes, sir. William Wordsworth has Hmm. written London 1802, in which there is Hmm. used apostrophe because he's addressing Milton, who is dead. Hmm. Okay. So, as you have mentioned, poetry is your favorite and interested genre. So, what about favorite poet? Let's be specific here. So, what is the name of your favorite poet? Favorite poet is S.T. Coleridge. Wow, S.T. Coleridge. So, have you read Aids to Reflection by S.T. Coleridge? No, I have read the Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan, Dejection and Odd, Christabel. What was the complete name of S.T. Coleridge? What's sir? What is the complete name of S.T. Coleridge? What is the It's complete name? Samuel Taylor Coleridge. Mm-hmm. Okay. So, what is his masterpiece? So, apart from Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan, another work Yes, sir. is considered his masterpiece. What is that? His masterpiece I know in the area of criticism, that's Biographia Literaria, published in 1817. Mm-hmm. Okay. Yes, sir. So, do you know he has played a major role in influencing the Americans and transcendentalism. So, name any two or three people who were, greatly impressed by the work of S.T. Coleridge, and they are the transcendentalists. Transcendentalism was started by Ralph Waldo Emerson. But Mm-hmm. he himself was influenced by transcendentalism, S.T. Coleridge, because he read German philosophy so much. Mm-hmm. Uh, he influenced Anya, some do you agree with this statement that biography literature is just a critical autobiography? critical autobiography. Mm-hmm. It's not just autobiography because he has given his theory of poetry. He has many chapters in which he has given the criticism of the lyrical ballads of William Wordsworth. So I can't say that it's just Okay, about last question, last two questions, and then we're going to sum up the discussion. What this. is the complete name of this particular culmination Biographia Literaria? What is the complete name of this work? Also, I know it by the name of this Biographia Literaria. Don't know the complete title. Uh, okay, biographical sketches of my literary life and opinions. Okay. Okay, maybe Okay. you need to revisit it. The last question is about his concept of fancy and imagination.
So Yes. can you just mention the exact lines of biography literature where S.T. Coleridge is talking about the imagination? Okay, so he says that basically there are two types of imagination, but before that he has defined fancy. So according to Coleridge, fancy is just a mode of memory liberated from the bounds of time and space. This is the definition of fancy that he has mentioned. And for imagination, he says that there are two types of imagination. One is primary imagination and the other is secondary imagination. The primary imagination is a faculty that each and every individual possesses, and it's not something very peculiar. But the secondary imagination is the peculiar quality, and that is something which is the speciality of Fair enough. poets. Fair enough. Miss Ania, the last question, some questions about JK. We are done with the literature and the academic questions. Who is the Yes. president of America? Joe Biden. Do you know the complete name of Joe Biden? No, sir. Okay, so Joe Biden, he is serving America and he been the vice president as well. So what is his slot right now? He is, if we are going to talk about the number, he is at which number? Like he is the 40th president, or the 50th president, or 25th numbers president. So on which slot Joe Biden is? I think he's on 47th or 48th number. That's what I can recall. No, no, he's not. Okay. Okay, so Hania, can you mention the names of some districts of Sindh, excluding Hyderabad, Larkana, Jacobabad, Jamshoro, and Karachi? Okay. No, I don't know much about the districts of Sindh, sir. How many total I know districts these are there 50. in Sindh? I know that there are, I think, 35 in KPK, but in Sindh, I don't know. I don't know, sir, exactly. How many districts are there in Punjab? Sorry, sir, I don't know. Okay, how many districts are there in KPK? In 35 are there. And what is the name of your district? Malakand. Okay, fair enough. So we are done with the formal discussion, Ms. Hania. It was a wonderful interview. Yes, sir. Now we're going to talk about the positivities and the points and the aspects where you're supposed to improve. Okay, sir. So we should talk about the good things first. We should try to highlight those things where you need to work more and more. In which spectrum we should move? So the negative aspects, because I think it was not very much good interview. I skipped so many questions, so I would like to know about my weaker areas. Well, skipping questions is not a measurement, is not a yardstick in the interviews. With the confidence level and the tackling questions and the technique, how you're perceiving the questions and how you're answering the question, that is more important thing. It's not just about the skipping, it's not a knowledge game only. The thing is that you're interested in the Urdu novels. That's fine that if you're interested in Umaira Ahmed, but you need to keep this thing in your mind that if you're going to talk about Umaira Ahmed, you'll have to answer all the questions, all those people who are writing in Urdu from Pakistan. Okay. So this question is directly proportional, and the examiner or the interviewer is going to ask the questions about those people who are writing in English from Pakistan. Okay. So you are not prepared, well prepared about those who are talking about the Bapsi Sidhwa. I think that you haven't read even a single novel of Bapsi Sidhwa by text. Okay. So you Yes. need to talk about, if you're going to mention the novel, so you need to work more and more on this particular genre. The second thing is that if you are talking about Umaira Ahmed, it is fine that you have done the PD with the PD Kamil, but you should revise some details about Abe Hayat and the other novels of Umaira Ahmed. Okay. 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 My suggestion is that because your hobby is going to give them a clue that from where they can ask the questions, maybe they're going to talk about post-colonialism, maybe they're going to talk about Pakistan, maybe they're going to talk about
the post-colonial literature. So if you are prepared enough, only go Okay, sir. हाँ नहीं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, प्लीज ओपन योर माइक. ओके. ओके जी. सो moving on from here. So आपने, you are talking about SC college. Fair enough. SC college is a critic. SC college एक ऐसा critic है कि वर्ड्सवर्थ के साथ मिलके लिखता है, लेकिन वो वर्ड्सवर्थ को भी नहीं छोड़ता है, वर्ड्सवर्थ के ऊपर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रिटिसिज्म करता है. So मेरा ख्याल है कि biography literary is a thing, is a clamination that it's not possible for you to complete. It's not possible for anyone कि उसको जो है वो ढंग से समझ सके या उसमें से references को quote कर सके. आपको शायद इसको अगर आप चेंज कर सकें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिटिसिज्म, बिकॉज ऐसी कॉलेज जो है वो हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो कि आप जो लॉज देता है, जो लॉ गिवर है, ठीक है. हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जो कि क्रिटिक है हमारे पास जो है. ही इज डिफरेंट देन वर्ड्सवर्थ एंड ऑल दोज पीपल जो इसकी एज में लिख रहे थे. एक ऐसा इंपॉर्टेंट नेम है, देखें, जो अमेरिका के अंदर एक पूरी की पूरी मूवमेंट जो है वो, जिसको रॉल्फ वेल्डो एमर्सन और उसकी कंपनी लेके चलती है, तमाम की तमाम मूवमेंट्स को जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहा है. सो इट्स अ गुड चॉइस, बट यू नीड टू टेकल ऑल द क्वेश्चन, स्पेशली अबाउट फर्स्ट इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं, और इन चीजों को देखने की काफी जरूरत है. Lastly, you mentioned that the poetry. Would you say that I shouldn't mention biography literature because I have I mentioned didn't my say favorite? no, no. Yes, sir. I didn't say this. I said Ji. that in case you're going to take ST college as your favorite genre, Okay. you need to read the 2 volumes of biography literature, because biography literature was not published in a single volume. It was published in 2 volumes. So you need to go in the details. और अभी जो आपको नॉलेज है ST कॉलेज के मुतालिक, दैट इज अ सुपरफिशियल नॉलेज, ठीक है. इसको ये इतना गहरा है कि आप इसको समझ नहीं सके अभी तक ढंग से. इसको देखने की जरूरत है, ठीक है. टॉकिंग अबाउट द पोइट्री, बिकॉज आपने जो पोइट्री के बारे में चीजें चूज की, कुछ बेसिक टर्म्स थी, मे बी जो है वो अभी आपके जहन में कोई एग्जांपल्स नहीं थे और आप ढंग से नहीं दे सके, लेकिन ये काफी रॉन्ग इंप्रेशन जाता है कि जब आपका फेवरेट जॉनरा है और आप उसमें जो है वो क्वेश्चन को आंसर ना कर सके. सो इन पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. टॉकिंग अबाउट द थिंग्स कि जो इंटरव्यू में बहुत अच्छी रही थी, द कॉन्फिडेंस ओवरऑल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था. यू टेक ऑल द क्वेश्चंस इन पॉजिटिव मैनर्स, जो brilliancy is up to the mark, so that is going to support you. That is a plus point. The third thing is that कि आपने क्वेश्चंस को एक सीक्वेंस के साथ जो है वो टैकल किया, एंड आपका जो जब आपने निगेट किया when you were not able to answer any question, तो आपने उसको बड़े ढंग से जो है वो देखा और आपने उसको बताया कि you will have to revisit the questions. So a negative saying that no, या आप उसको जो I haven't the answer, तो आप इससे जो है वो काफी अवॉइड किया. That is the good impression. Overall, if we rate your interview out of 100, you are somewhere on this digit, that is a 60 marks. So that means कि 60 से 70 के करीब अगर आप होते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े पुअर होते हैं. बट इफ योर score is more than 70, that means you are there in the list. So I'm sure that So inshallah out of next time 25, how much you think out of 25? आप इसकी परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है. आप इसकी Okay. परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि 70% जो है वो 25 के क्या बनता है. सो इफ आई एम गोइंग टू अवॉर्ड यू द 70 मार्क्स, तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है. Okay, sir. तो ये आपके 17.5 मार्क्स बनते हैं. ओके, 17.5. Okay, sir. तो बट आपके लिए 20 से ऊपर जो है वो लेने जरूरी है, ठीक है. Yes, इफ यू वांट टू बी देयर इन द लिस्ट. सो there are only दिस ऑल हम yeah. hard, inshallah. Inshallah, you will, and I'm sure that you will not only work hard, you will come up with a better interview, inshallah, next time. जो है और आपकी प्लस पॉइंट ये है कि खवातीन में से जो है you are the only one जिसने अपने इंटरव्यू को जो है वो इंटरव्यू वाले दिन आप मौजूद रहे और आपने क्लासेस को स्किप नहीं किया. So you are a brave girl in that way कि आपने अपने इंटरव्यू वाले दिन जो है वो इंटरव्यू को फेस किया. So no, she is from KPK. इशफाक साहब जो हैं वो SPSC से हैं.
तो अब जो है हमारे पास जो है in next class we are going to have the discussion about the next questions. But before that, let me recall and let me remind you once again कि आप अपने questions के ऊपर ठीक ठाक work किया करें, and after every class you're supposed to revise all the details. You should at least give 2 to 3 hours to your interview. So whatever you are discussing here, whatever you're covering in your classes, you're requested कि आप इसको जो है वो जरूर एक दफा देखा करें. So I'm sure that it's been a wonderful session and we have enjoyed the session. Hope to see all of you tomorrow. Till then, take care of yourself and have a good day. Love.